गवर्नर से आग्रह करते हैं कि कृपया अपना स्वागत संबोधन दें। Honorable Prime Minister, Honorable Governor of Maharashtra, Honorable Chief Minister Maharashtra, Honorable Finance Minister, Honorable Union Ministers of State for Finance, Honorable Deputy Chief Ministers of Maharashtra, distinguished invitees, media representatives, and my colleagues from the Reserve Bank, both past and present. Today, the Reserve Bank of India enters the 90th year from its establishment on April 1, 1935. The journey of the Reserve Bank over the last 9 decades has been one of efficient functioning and contribution to the nation's progress. On this momentous occasion, it's my proud privilege on behalf of the Reserve Bank of India to welcome the Honorable Prime Minister to this commemorative event. Sir, your presence here amidst your very busy schedule is a source of great inspiration to all of us in the Reserve Bank. I also welcome the other dignitaries, the Governor Maharashtra, the Chief Minister Maharashtra, the Honorable Finance Minister, and other dignitaries on the dais to this event. Further, I welcome all distinguished dignitaries who are present here, all our invitees, and each one of you who has made it convenient to be here. The Reserve Bank's evolution as an institution has been closely intertwined with the development of the Indian economy. From being a central bank primarily concerned with allocation of scarce resources during the planning period, the Reserve Bank has transitioned into being an enabler for the market economy. We are a full-service central bank with our functions spanning multiple dimensions. It has been our endeavor to promote a financial sector that is robust, resilient, and future-ready. The path-breaking structural reforms, such as the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the adoption of flexible inflation targeting in the recent years, have helped us to deal with the challenges in the banking system and the task of maintaining price stability more effectively. Given the rapid changes taking place in today's world, especially in the areas of technology, innovation, business practices, and growing complexities in the financial sector, the Reserve Bank is constantly evaluating the emerging trends and taking necessary policy measures to remain in sync with the changing times. Our effort is to anticipate situations and take proactive measures. The global turmoil arising from the COVID-19 pandemic and the ongoing geopolitical hostilities have tested the resilience of every economy in the world, including India. The well-calibrated and coordinated monetary and fiscal policies adopted in our country went a long way in shielding our economy from these shocks and helped us to emerge even stronger than before. It's a matter of satisfaction that today our GDP growth is robust, inflation is moderating, the financial sector is stable, the external sector remains resilient, and the forex reserves are at an all-time high. Over the years, the Reserve Bank has emerged as a symbol of stability, resilience, and commitment to the welfare of our citizens. This has been possible due to the contributions made by generations of the team RBI. As we move towards RBI at 100, the Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress. With these words, let me once again welcome the Honorable Prime Minister and the other dignitaries present in the dais and each one of you who is present here in the audience to this commemorative event of 90 years of the Reserve Bank. Thank you. Namaskar.
धन्यवाद। अब हमारा आग्रह है माननीय वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से कि कृपया अपना विशेष संबोधन दें। Respected Prime Minister, Honorable Governor of Maharashtra, Chief Minister of Maharashtra, my colleagues in the Council of Ministers, Deputy Chief Ministers of Maharashtra, Governor Reserve Bank, all invited dignitaries, media, I'm here on a very happy occasion when today we mark the 90th anniversary of Reserve Bank of India. RBI, the Central Bank of India, has actually had a remarkable checkered history. It stands tall among its peers on several counts. Once in a century pandemic, the COVID, hit us. The RBI adopted and in fact deployed conventional and unconventional range of instruments to provide liquidity and to promote growth and to ensure financial stability. The two examples that I can cite and which can stand before as a classic example are the moratorium on loan repayments and also the liquidity infusion which happened during that time. Later came the Russia-Ukraine war. RBI's measures primarily aimed at two things. One, to address the inflation and the forex market's volatility. RBI, in fact, has been one of the earliest to recognize the non-transient nature of inflation. One of the few central banks, if I may say so, to front-load policy rate hikes in particular. Forex reserve management is also something on which we have this opportune moment to recall the work done by the RBI. Building up reserves, including foreign exchange interventions. In the past few years, India's capacity to manage and also to take care of external imbalances and uncertainties have significantly improved purely because of the professional management of the RBI. Rupee has exhibited lower volatility and orderly movements is what we notice of the rupee, and they are in relative terms to the rest of its peers. Managing India's banks is something which I'll recall at this time. A decade ago, balance sheet problem, today is a balance sheet advantage, and that advantage accrues to our economy. Collaborative effort of the Government of India and RBI, the asset quality management, prompt corrective action framework are all great functions well carried out by our true regulator of the banks, Reserve Bank of India. Fiscal and monetary policy coordination, as always, the Government of India is one of the governments, like very many others, and RBI manages its debt, which is very important for government. Inflation management, despite monetary tightening pressures and the measures which have been taken for monetary tightening, has stabilized the G-Sec yields, which is very important for the economy. The stability in G-Sec markets has contributed to overall financial market resilience and investor confidence in the Indian economy. Lastly, the Bank of International Settlements, BIS, has mentioned significant role played by RBI in a very unconventional point. RBI's role in anchoring inflation expectations using communication policy is significant, is what the BIS has said. And I'm sure not one in this audience would disagree with that. Apart from forward guidance,
it was used for explaining the rationale. The policy of communication management has been used for explaining the rationale for the measures taken by the RBI. Thus, in the economy, confidence was built, and then optimism, if I can say so, optimism has been held up even during pandemic, held high and never let down. So optimism building is a very beautiful function which the RBI during crisis time has handled, because it adopted this unconventional instrument of communication with the people. And final word, institutional integrity is something which I would credit the RBI, and among very many central banks, India's RBI, for its institutional credibility, needs a big applause in the 90th anniversary. Thank you very much. धन्यवाद माननीय आपके मार्गदर्शन के लिए। रिजर्व बैंक की इस अभूतपूर्व यात्रा को समर्पित एक स्मारक सिक्का जारी करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जारी होने वाले सिक्के को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जहां हम भारतीय रिजर्व बैंक के 9 दशकों की यात्रा को मना रहे हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ने कई नई कार्य प्रणालियों की शुरुआत की और कई पुराने कार्यों में नवीनता लाई है। आइए देखते हैं इस यात्रा को दर्शाते हुए एक लघु फिल्म। The Reserve Bank of India came into existence on 1st of April 1935 as a joint stock company. It was nationalized in 1949. Over the last 9 decades, through its multifarious functions, the RBI has played a crucial role in the development of Indian financial sector and the economy. As the currency issuer of the country, the RBI has ensured supply of good quality banknotes. It has achieved near self-sufficiency in printing and sourcing of security features of banknotes by setting up of currency printing presses, paper manufacturing units and in-house ink factory. Being the banker and debt manager to the central and state governments, the Reserve Bank has managed their market borrowing programs and facilitated development of the government securities market. Introduction of new instruments, strengthening market infrastructure and expanding the participant base, including retail investors, have ensured deepening of financial markets. India's monetary policy framework has evolved from monetary targeting to flexible inflation targeting, which was introduced in 2016. This was a major structural reform and has fostered price stability. RBI's monetary policy decisions are backed by its robust research and data analysis. The Reserve Bank is also responsible for the country's foreign exchange and reserves management. Its role has evolved over the years from being a regulator to a facilitator in an environment of market-determined exchange rates. A number of measures have been taken to simplify foreign exchange regulations for facilitating investment and trade.
As the regulator and supervisor of a large part of the financial sector, the RBI has played a crucial role in promoting a sound and efficient financial system in the country. The regulatory and supervisory architecture of the financial system has been comprehensively restructured in the recent years. As a part of its commitment to financial inclusion, the Reserve Bank's policy on priority sector lending and many other measures has channelized credit to the needy sectors of the economy. This has given a strong fillip to financial inclusion. To strengthen customer protection and grievance redress mechanisms, the scope of Banking Ombudsman Scheme has been gradually widened. The Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme embodies the One Nation, One Ombudsman approach. India now has state-of-the-art payment systems that are affordable, accessible, convenient, safe and secure. The country has acquired a leadership position in digital payments landscape. As a regulator of the payment system, the RBI has played a significant role on making this possible. As part of promoting responsible innovations in financial services, the regulatory sandbox of the Reserve Bank provides a platform for developing solutions with focus on innovation and research in the fintech space. Giving further fillip to innovation, the RBI has taken a pioneering role among central banks by introducing the digital rupee, the central bank digital currency, in 2022 as a pilot project. The RBI has also been an institution builder in niche areas of the financial services sector. In its 90 years journey, the Reserve Bank has navigated through turbulent times with commitment and determination. This was prominently visible during the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. India's financial system and the economy have emerged stronger from these unprecedented global shocks. As we commemorate 90 years of the RBI, we rededicate ourselves to building a robust financial system that is future ready and contributes to the well-being of our country and the people. अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया इस सम्मेलन को संबोधित करें, हमें प्रेरणा दें, हमारा मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारामन जी, भागवत कराड़ जी, पंकज चौधरी जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी अजीत जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं
उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। मैं आरबीआई को उसके लक्ष्यों और संकल्पों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर, भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है। जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। इन शॉर्ट, मैं यही कहना चाहता हूं, नियत सही तो नतीजे सही।
कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक की हालात सुधारने के लिए सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया और साथ ही गवर्नेंस संबंधी कई रिफॉर्म्स भी किए। अकेले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए। और एक आंकड़ा देशवासियों को जरूर जानना जरूरी है। 27,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, वो सितंबर 2023 आते आते 3% से भी कम हो गया। आज ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अतीत का हिस्सा हो चुकी है। आज बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 15% तक हो गई है और मैं इन सभी उपलब्धियों में आरबीआई की सहभागीदारी और प्रयासों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, आरबीआई जैसे संस्थान के बारे में चर्चा अक्सर फाइनेंशियल डेफिनेशन और कठिन टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित रह जाती है। आपका कार्य जितना जटिल है उसमें यह स्वाभाविक भी है, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे देश के सामान्य मानव का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। बीते 10 वर्षों में हमने सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बीच इस कनेक्ट को हाईलाइट किया है। गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन आज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज देश में 52 करोड़ जनधन खाते हैं। इनमें भी 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर है। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रभाव आप एग्रीकल्चर और फिशरीज जैसे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। आज 7 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स, फिशरमैन और पशुपालक के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इससे हमारी रूरल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिला है। कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पिछले 10 वर्षों में बड़ा बूस्ट मिला है। सहकारिता में कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है
और ये रिजर्व बैंक के रेगुलेशन और सुपरविजन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यूपीआई आज एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पर हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। साथियों,